So hemostasis. So अभी देखो तो what is the mechanism, what is the steps involved in the coagulation of the blood? यहाँ पे 3 स्टेप लिखा है देखो, activation, adhesion and aggregation of platelets. Actually, for blood coagulation, the platelet is very important cell for the coagulation of blood. So again, I am explaining what is blood coagulation. Blood coagulation is the process by which blood converted into a gel form, or it is the process by which liquid blood is converted into a gel form, is called as blood coagulation. The another name of blood coagulation is called as clotting. Another name of blood coagulation is called as clotting or hemostasis. See here, hemostasis. Hemo means blood. Stasis means coagulation. Hemo means blood. Stasis means coagulation. So the another name of blood coagulation is called as hemostasis. Next, for the coagulation of blood, various type of proteins are necessary. मीन्स ब्लड कोagulation के लिए बहुत सारा फैक्टर्स जरूरी है. मीन्स जो फैक्टर्स को हम लोग टुगेदर बोल सकता है प्लाज्मा प्रोटीन्स, बिकॉज these all the factors present in blood plasma, that's why the factors which are responsible for the coagulation of the blood is called as blood coagulation factors. So here 13 factors are necessary. 13 factors are necessary for the coagulation of blood. So these all the 13 factors together we can call as plasma proteins. So what are the name of 13 factors? You see, what are the name of 13 factors? See here, factors 1 is called fibrinogen. Factor 1 is called fibrinogen. Factor 2 is called prothrombin. Factor 3 is called thromboplastin. The another name of the thromboplastin is called tissue factor. Yad rakhna. The factor 3 is also called as tissue factor, which is known as thromboplastin. Factor 4, calcium. That is calcium in the form of the calcium ion. Factor 5 is called Leville factor, and factor 5 is also called as proaxillerin or accelerator globulin. Proaxillerin or accelerator globulin. Factor 6, you see, it has factor 6. There is no another name because this other name still did not discover. Factor 7 is called stable factor. Factor 8 is called anti-hemophilic factor. Or anti-hemophilic globulin. ये फैक्टर 8 का दो नाम है. एक होगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, दूसरा नाम होगा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन. फैक्टर 9 is called Christmas factor. Factor 10 is called Stewart power factor or SPF. S for Stewart, P for power, F for factor. Factor 11, plasma thromboplastin antecedent. Factor 11 is called plasma thromboplastin antecedent. Factor 12 is called Hasman factor or contact factor. Last factor is called factor 13, which is also called as fibrin stabilizing factor or fibrinase. Factor 3 is called fibrin stabilizing factor or fibrinase. These are the total 13 factors. Responsible for the coagulation of the blood. Next slide.
go for mechanism of the blood coagulation. Mechanism of the blood coagulation. You see, ब्लड कोagulation दो प्रोसेस से होता है. यहाँ पे लिखा है एक इंट्रिंसिक पाथवेज, एक इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे. देखो यहाँ पे ब्लड कोagulation दो प्रोसेस से होगा. एक फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे. तो इंट्रिंसिक पाथवे कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये डायग्राम देखो. इंट्रिंसिक सिस्टम में क्या होगा, सरफेस कांटेक्ट मींस यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट. सरफेस का कांटेक्ट क्या होता है, मींस हम लोग का बॉडी का किसी का प्लेस में कोई आइदर हैंड लेग और बॉडी का किसी का प्लेस में कोई दैट इज हीट और किसी के वजह से कटिंग हुआ और डैमेज हुआ, उसको बोले सरफेस कांटेक्ट. किसी का प्लेस में कोई कटिंग और कोई हीटिंग होगा, उस प्लेस एरिया में क्या होगा, ब्लड निकलने लगेगा, ब्लड निकलेगा, क्योंकि ड्यू टू ट्रोमा. ट्रोमा मींस नथिंग बट मैकेनिकल हीट और फिजिकल स्टिमुलस, आइदर कटिंग और हीटिंग, दैट इज कॉल्ड सरफेस कांटेक्ट. हम लोग का बॉडी में किसी का प्लेस में और किसी का जायगा में कोई भी हीट और आइदर बाय एक्सीडेंट और हीटिंग होगा, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे उसका ब्लड में जितना फैक्टर्स यहाँ पे देखा है उस टाइम पे एक्टिवेट होगा. द फैक्टर्स आर एक्टिवेटेड, that is the blood coagulation factors are activated by stimulus. That stimulus may be either a physical or chemical. See here पे any stimulus if stimulate the blood coagulation factors, you see first which type of factor will be stimulated by chemical or physical stimulus. You see here, this is pre-collicrane or collicrane. This is the one cytokines or chemical mediator present in the plasma. See here, pre-collicrane or collicrane is a cytokines or chemical mediators present in the plasma. जिस टाइम पे तुम्हारा बॉडी में कोई हीट और आघात आएगा, ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होगा. दैट इज प्री-कोलिक्रेन और कोलिक्रेन मींस सपोज तुम्हारा बॉडी का any place, any part of the body is heated either by physical contact or by chemical compound, then what will happen, this pre-collicrane or collicrane cytokine is activated in the plasma. So when this pre-collicrane or collicrane activated by physical stimulus, then it will activate the factor 12. It will activate the factor 12. So factor 12 is activated to form the activated factor 12. Now activated factor 12 again sequentially activate the microphone सब लोग म्यूट करो. So yeah, the pre-collicrane or collicrane is a plasma mediator. It is basically activated by either physical or chemical stimulus. When this mediator activated by physical or chemical mediator, then sequentially all the blood coagulation factors are activated. You see here, first of all, factor 12 is converted into activated factor 12. Now, activated factor 12, what it will do? It will activate the factor 11 to form the activated factor 11. Now, this activated factor 11 sequentially activate the factor 9. This factor 9 in the presence of calcium ion to form the activated factor 9. Now this activated factor 9 activate the factor 8 in the presence of thrombin, to form the factor activated factor 8.
Now this activated factor 8 in the presence of enzyme phospholipase and calcium ion activate the factor 10. Activate the factor 10 to form the activated factor 10. So now this activated factor 10 also, this factor 10 also activated by the factor 7. Factor 7 which is activated by extrinsic pathway. देखो यहाँ पे एक्चुअली अल्टीमेटली क्या होता है, टोटली द फैक्टर 10 विल बी एक्टिवेटेड बाय, माइक्रोफोन किसका चल रहा है? Basically in this mechanism the factor 10 will be activated. Factor 10 will be activated. Factor 10 will be activated by either intrinsic pathway or extrinsic pathway. Now this one got so factor 10 will be activated by either intrinsic pathway और extrinsic pathway. तो intrinsic pathway क्या होगा? Intrinsic pathway पहले क्या होगा, हम लोग का बोर्ड में कोई भी that is this pre-collicrane or collicrane will be activated by either physical or chemical stimulus. Then this pre-collicrane or collicrane sequentially activate the various type of blood coagulation factor. पहले 12 को activate करेगा to form the activated 12 factor. Then this activate 12 factor activate the factor 11. This activated factor 11 activate the factor 9. Now this factor 9 activate with the help of calcium to form the activated factor 9. Now this activated 9 factor activate the factor 8 in the presence of thrombin. Now this activated factor 8 in the presence of phospholipase enzyme and calcium activate the factor 10. Now this factor 10 also activated by factor 8, activated factor 8, which is activated by extrinsic system or by tissue factor. Now you see this activated factor 10 in the presence of phospholipase enzyme and calcium ion activate the factor 5 in the presence of thrombin. You see here the fact this is activated factor 10, activated factor 10. Now this activated factor 10 in the presence of phospholipase enzyme, calcium ion and thrombin activate the factor 5 to form the activated factor 5. Now this activated factor 5, now this activated factor 5 react with the prothrombin, react with the prothrombin to form thrombin, Now this thrombin react with the fibrinogen. This thrombin react with the fibrinogen to form the fibrin monomer, Now this fibrin monomer in the presence of activated factor 13(8) and calcium ion to form the fibrin polymer or cross-linked fibrin These cross-linked fibrin are nothing but called as coagulated blood. This is the coagulated blood. So this is the basic mechanism of how blood is coagulated. मैं कैसे blood coagulate होगा फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. The blood coagulation involve two pathways. यहाँ पे दो प्रोसेस होगा, एक होगा इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे. तो इंट्रिंसिक पाथवे क्या होगा? इंट्रिंसिक पाथवे हम लोग का बोर्ड में क्या होगा, कोई भी फिजिकल
और केमिकल स्टिमुलस प्री कोलिक्रेन और कोलिक्रेन को स्टिमुलेट करेगा, मींस ये प्लाज्मा में रहता है। प्री कोलिक्रेन और कोलिक्रेन एक्टिवेट होने के बाद में ये सीक्वेंशियली मींस sequentially it will activate all the factors, that is factor 12, 11, 9, 8. Ultimately this factor 8 activate the factor 10. Factor 10 also activated by the factor 7, which is activated by extrinsic pathways. Now this factor activated factor 10 in the presence of phospholipase enzyme calcium ion activate the factor 5. This factor 5, activated factor 5, this activated factor 5 react with the prothrombin to form the thrombin, and thrombin ultimately react with the fibrinogen to form the fibrin monomer. Now this fibrin monomer react with the activated factor 13, in the presence of the calcium ion to form the cross-linked fibrin, nothing but coagulation of the blood. So this is the basic mechanism of blood coagulation. Next, disorder of the blood. So disorder of the blood, यहाँ पे ब्लड का बहुत सारा डिजीज होता है. फर्स्ट डिजीज कॉल्ड एनीमिया, नेक्स्ट हीमोफीलिया, नेक्स्ट that is hemophilia, anemia and blood cancer. So these are the basic disorder of the blood. तो आज हम लोग एनीमिया बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. देखो एनीमिया क्या होता है. बेसिकली एनीमिया क्या होता है, हम लोग का बॉडी में, सब लोग को मालूम है, हम लोग का बॉडी में क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है. हीमोग्लोबिन क्या है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, एनीबॉडी, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, एनी आंसर? हेलो सर, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन कैरियर जो होता है सर, हेमोग्लोबिन सर, ऑक्सीजन को कैरी करता है सर. अच्छा नहीं, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, आई एम आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय हीमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन सर हो जाता है जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट रहता है सर, जो पिगमेंट है सर, पिगमेंट. हां वेरी गुड. हेम प्लस ग्लोबिन सर मिक्स रहता है सर, उसको सर हेमोग्लोबिन कहते हैं. वेरी गुड, फैंटास्टिक आंसर, वेरी गुड. आयरन कंटेनिंग सर इसको कह सकते हैं सर, एक तरह से. ओके, वेरी गुड सुरभ, नो प्रॉब्लम, फैंटास्टिक. तो देखो नाउ व्हाट इज एनीमिया. एनीमिया एक डिजीज है जहां पे हम लोग का बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा. तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन कंटेंट, हीमोग्लोबिन परिमाण हम लोग का बॉडी में कम हो जाएगा. तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज एनीमिया. सो एनीमिया इज ए disease in which decrease the RBC production, or decrease the hemoglobin concentration in the blood, so हिंदी में कैसे बोलोगे, एनीमिया ये एक ब्लड का डिसऑर्डर है जहां पे हम लोग का बॉडी में रेड ब्लड कॉर्पस्कल का परिमाण और काउंट कम हो जाएगा और हम लोग का बॉडी में हीमोग्लोबिन का मात्रा कमी होगा, तो उसको बोलूंगा हम लोग एनीमिया. तो हम लोग सिंपल इंग्लिश से कैसे बोल सकता है, सो एनीमिया इज ए डिजीज इन व्हिच द count of red blood corpuscle will be decreases or decrease the concentration of the hemoglobin, in the blood, is called as anemia. Now देखो हम लोग का बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितना रहता है, फॉर मैन 13.5 to 17.5 grams per deciliter, the normal amount of hemoglobin for men. You remember this one, 13.5 to 17.5, the normal range of hemoglobin for men, and in case of female 12 to 15.5 grams per deciliter. This is the normal range of hemoglobin in men and women. Now इससे
कम हो जाएगा तो उसको हम लोग एनीमिया बोल सकता है. दैट इज व्हेन द amount of the hemoglobin decrease, when the amount of the hemoglobin is decreased in the blood is called as anemia. Is called as anemia. एनीमिया किस किस वजह से हो सकता है, कारण बताओ, कोई मालूम है एनीमिया किस लिए हो सकता है? आयरन. हाँ, नेक्स्ट. और एनीबॉडी, एनी आइडिया दूसरा का? सौरभ, प्रभात, उमाशंकर, अंशु, एनीमिया किस वजह से हो सकता है? एनी आइडिया फॉर यू? आनंदराज, एनीमिया ब्लड में हीमोग्लोबिन कैसे कम हो सकता है, कुछ आइडिया? एनीमिया बहुत सारा कारण से हो सकता है. फॉर एग्जांपल विटामिन बी सर, विटामिन बी. हाँ, विटामिन बी, वेरी गुड. नेक्स्ट. विटामिन बी मींस B1, B2, B3, B4, B5, B12. Which one? B12. B12. फैंटास्टिक, B12 फैंटास्टिक. और कुछ कारण तुमको मालूम है जो एक्चुअली इन केस ऑफ मेल और मेल में व्हाट टाइम में ब्लड कम रहता है, क्यों? एनीबॉडी आइडिया? व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ दैट इज एनीमिक इन केस ऑफ मेल? फीमेल में व्हाट टाइम पे उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, व्हाई? एनी आइडिया? सर पीरियड के टाइम सर. एकदम एग्जैक्ट, राइट आंसर, राइट आंसर. एज बिकॉज इन केस ऑफ गर्ल्स देयर इज ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल. हर मेंस्ट्रुअल में बहुत सारा ब्लड निकलता है और लॉस होता है, इसलिए उन लोग का हीमोग्लोबिन मात्रा बहुत कम रहता है. तो इसलिए फॉर फीमेल कैंडिडेट में क्या होता है, उन लोग एनीमिक, उन लोग का हर टाइम में हीमोग्लोबिन मात्रा कम रहता है ड्यू टू द एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल. गुड. तो आ जाओ, अभी हम लोग एनीमिया कितना टाइप होता है तो अभी तो समझ में आ गया. व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया इज द रिडक्शन ऑफ द काउंट ऑफ आरबीसी इन द ब्लड और डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. अभी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया? देखो, एनीमिया बेसिकली एनीमिया हम लोग दो टाइप से भाग कर सकते हैं. एक होगा पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, दूसरा होगा मॉर्फोलॉजिक या मॉर्फोलॉजिकल morphology classification of anemia. Morphology classification of anemia. We have some of these. Morphology classification. One. So anemia are classified into two types. One, the basis of pathophysiology, on the basis of pathophysiology. दूसरा होगा morphological classification. Morphological classification. अभी आओ, next slide. So morphological classification again classified, you see here the morphological, that is pathophysiological classification. On the basis of pathophysiology we can classify the anemia in various types. You see here, you see again, this is the classification of pathophysiological basis of anemia. So on the basis of pathophysiology we can classify the anemia in different groups. You see here, first one, anemia due to increased blood loss. एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज ब्लड लॉस. दूसरा होगा एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन. रेड सेल प्रोडक्शन. तो पहले लगाओ, एनी